Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing very good. Myself Sari Said. Today our topic of discussion is the poem Rebel by D.G. and Wright. What is meant by a rebel? Rebel is the person who do against the society, who always do the against the norms and conditions and society, who always go opposite the track, who always do the wrong things or the different things. This poem is a criticism of a behavior of a rebel. The poet describes the attitude and point of view of a rebel as compared with ordinary normal man. The poet says that the attitude of a rebel is always opposing to the normal human attitude under various circumstances. The rebel always gives an opposite opinion. He prays for rain when everyone wants the sun to appear. At the end of the poem, the writer tells that the deviations of the rebel from norms and also beneficial for society in a way. He tells that if there is no rebel in the society, we cannot recognize the various opinions of the people. The poet says it is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. रेबल कौन होते हैं? जो हमेशा सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं. अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें दो चीज़ें भी आ सकती हैं. इसमें पॉजिटिव रेबल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव में क्या, आपके पास एग्जांपल है बहुत बड़ी कायदे आज़म की कि ही गोज़ अगेंस्ट द सोसाइटी, ही गोज़ अगेंस्ट द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी, ही गोज़ अगेंस्ट द दैट काइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ दैट टाइम. जब हर बंदा जो था वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर काम कर रहा था, तब क्या किया था? कायदे आज़म स्टैंड्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड अगेंस्ट द हिंदू नेशनल कांग्रेस एंड हिंदुज़म. और क्या किया कि ही फाइट फॉर द सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान. He fight for the different country, for a separate country for the Muslims in which we are living today, the Pakistan. तो कायदे आज़म इज़ काइंड ऑफ अ रेबल बट इन अ पॉजिटिव वे. तो नेगेटिव वे में रेबल्स क्या होते हैं? जैसे चोर डाकू दहशतगर्द, ये क्या होते हैं? सोसाइटी के अगेंस्ट चले जाते हैं. जो एक चीज़ राइट जा रही है वो क्या करते हैं, उनको उस चीज़ अच्छी इशू हो जाता है उस चीज़ से. मतलब कि अक्सर रेबल क्या होते हैं कि हमारे अपनी सोसाइटी में अगर हम इर्द गिर्द देखें, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी खुशी में खुश नहीं होते, वो उसके अगेंस्ट चल जाते हैं. तो क्या होता है कि वो आपसे जेलसी फील करना शुरू कर देते हैं. वो आपके लिए जो एक अगर जब टीम आपके लिए एक सोसाइटी के एक तरफ आपके लिए वो प्रे कर रहे हैं, अगर आपकी खुशी में खुश हो रहे हैं, तो दूसरे क्या करेगा? वो द रेबल क्या करेगा? बदुआ देगा आपको, या आपकी खुशी के लिए कुछ ना कुछ आपको कर्ज करेगा, या कुछ ना कुछ मतलब ऐसा अपोजिट होगा, जादू टूना हो जाएगा, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा. तो वो होगा रेबल. तो रेबल के भी इस तरीके से दो टाइप के रेबल्स होते हैं. इसमें सोसाइटी में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं. दहशतगर्द होती है, वो उनको लगता है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, सोसाइटी जुल्म कर रही है, गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, तो वे गो अगेंस्ट द सोसाइटी. Summary क्या है? The Rebel is an excellent poem by D.G. and Wright. The poet has beautifully described the likings and dislikings of a rebel in the context of a various social states. The poem is indeed a satire on the attitude of a rebel. The rebels are against every situation. They want to maintain their individuality. They are the people who fed up with dull and boring social traditions. They want to change social norms with their behavior and attitude. When people have a short hair, the rebel grows his long hair. He grows his hair long and become different from others. When the other grow their long hair, the rebel cut his hair short. In this way, he looks different from others and maintain his individuality. In the class, when there is a question answer session and students ask questions, the rebel will not utter a word. He will be quiet, listening to others carefully. But when there is a lecture and everyone is silent, listening to the lecture carefully, the rebel speaks and tries to become outstanding. He disturbs the class but is satisfied with his act. रेबल क्या करता है? हमेशा सोसाइटी के अगेंस्ट जाता है, हमेशा जो कुछ हो रहा है उसके अगेंस्ट करने की कोशिश करता है. मतलब अगर एक कुछ जमात जो है वो कुछ लोग लंबे बाल रख रहे हैं, रेबल क्या करेगा? छोटे रख लेगा. अगर किसी जगह पर ट्रेडिशनल लुक में जाना है, शलवार कमीज़ में जाना है, तो रेबल क्या करेगा? पैंट शर्ट में चला जाएगा.
कोई ना कोई उसके पास उसके बारे में आर्ग्यूमेंट के लिए उसके पास पॉइंट होता है कि भाई मैं इसलिए आया हूँ, मैं क्या करूँगा, या मुझे कोई परवाह नहीं है, आई डोंट केयर व्हाट द सोसाइटी सेज या व्हाट द सोसाइटी वांट्स. In dressing, a rebel is against a strange man. He dresses differently from others. He wears colorful clothes when other wears plain and simple dresses. When other wears colorful and showy clothes, the rebel would wear plain and simple dresses. In this way, he looks different from others and is easily recognizable. उसको इजीली हम पहचान सकते हैं कि ये भाई रेबल है. बाकी सब ने इस तरीके की ड्रेसिंग की हुई है, इसने डिफरेंट की हुई है. In the company of a dog lovers, the rebel would go talk about cats and will show his love for cats. And when people are talking about cats, he would say some words in favor of dogs. His sole motive is to make himself distinct. When the people are praying for sunlight, the rebel would demand rain and clouds. He will pray for rain. When people want hot weather, he wants cold weather. And when people enjoy a rainy day, a rebel will pray for the sun to come out. Similarly, when everyone stays at home, the rebel attends functions and gatherings. And when all the peoples go to attend the meetings and gatherings, the rebel say, stay as home. When everyone says yes, the rebel would say no. Hence, every act of rebel is exactly the contradictory to what others do. This is his strange and conflicting acts that become his identity. Why we recognize a rebel in the society? How we recognize a rebel in the society? Because he always against the society. He always goes against the society. He always do the wrong things. He always do the opposite things. If you are saying, or everyone is saying yes, he would say no. If everyone is in uniform in the college, the rebel would be in formal dresses in a different way. The poet says that rebel is still a good thing for society. It is good to have rebels among us. They are a source of contrast and full colors in our life. Without rebel, the world would have only one color. The poet has expressed his soft feelings about the rebel. The poet wants us to realize the feelings of a rebel when people start criticizing on them. They bear the criticism with courage. They are considered abnormal persons of society. I hope you understand the lecture. If you have any kind of question, please inbox me in the WhatsApp or drop a comments in the comment box. Have a good day. Thank you.